friends, how are you? Myself देवाशीष। ये मेरा पहला कोशिश ब्लॉग बनाने के लिए। मैं पहले फ़ोटो उठाता था, छोटा छोटा वीडियो बनाता था, लाइक फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील। सो दोस्तों ने बोला कि लेट्स मेक इट बिगर, अभी थोड़ा ब्लॉग बनाओ, ट्राई करो। सो मैं भी थोड़ा इंसिस्ट होके बोला लेट्स हैव अ ट्राई। पता है इनिशियली इट वाज लाइक, पहले थिंकिंग करता था कि ब्लॉग बनाना बहुत टाइम देना पड़ता है। बेसिकली आई एम डूइंग अ जॉब, सो पिक्चर उठाना, वीडियो बनाना, ये सब एक पैशन था, लेकिन यू नो जॉब के वजह से थोड़ा टाइम कम मिलना, फैमिली, ये सब मिला के मतलब खिचड़ी टाइप का पक गया। जो भी हो, तो पहला ब्लॉग है मेरा, बहुत सारा गलती होगा, हमको पता भी है, लेकिन आई वॉन्ट योर फीडबैक हाउ टू इम्प्रूव मी एज ए गुड ब्लॉगर। ओके, ये आप लोगों से मेरे को सपोर्ट चाहिए। होप आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। काम नहीं है ना, शाम को नहीं, एक्चुअली निकलना है दोपहर में। अरे कहाँ जाना है मैं बताएगा बाबा, यही तो सरप्राइज है। जाना है कि नहीं तो ठीक है, ये चल आजा। अभी निकलने का टाइम आ गया, बैग पैक करते हैं, आज निकलते हैं कहीं। सरप्राइज है, उसको कुछ बोला नहीं, देखते हैं। अभी मेरे को बैग पैक करना है यार, कैमरा वगैरह उठाना है। लेट्स सी। गिम्बल लेना है, स्टैंड, अरे सरप्राइज है, चलो ना। चलो। मैं शू पहन लेता हूँ। चल।
सरप्राइज है। चलते And what हैं, for? चलते हैं ना। आज दिखाते हैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी शारजा में फॉसिल्स रॉक। कभी गया है? Wow, no. But I have चलो। heard about it. एक्चुअली इधर से अभी 1 घंटा का जर्नी लगेगा। 1 घंटा जाने के बाद हम लोग को फाइनली डेस्टिनेशन है फॉसिल्स रॉक। Okay. उधर जाके हम लोग सनसेट देखेंगे एंड ट्राई करेंगे हाइकिंग करने का। उधर एक्चुअली जो प्लान है ऊपर जाके सनसेट देखने का, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। हम लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं। इट्स ऑलमोस्ट Okay, no problem. Let's try. Let's go. हम लोग अभी एक टी स्टॉल में खड़े हैं। उसका नाम क्या है मैं दिखाता हूँ। ऑन द वे में एक मॉस्क भी आता है आपका। ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 25 किलोमीटर और वो पेंडिंग है। अभी थोड़ा ट्री ब्रेक के लिए हम लोग रास्ता में रुके हैं। सी, दिस इज़ द मॉस्क। आप लोग इधर आ सकते हैं। The sunset over here is just beautiful। And second thing, आप लोग इधर नाइट कैंप कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। और हाइकिंग के लिए इधर लॉट्स ऑफ स्पेस इज देयर। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू नो आफ्टर फ्रेंड्स, आई विल शो यू लेटर। लेट्स मूव ऑन, क्योंकि उधर भी और जगह है, और भी बहुत सारा जगह है हम लोग को जाना है। बाय दिस आप लोग को दिखाता हूँ। और भी है। इन लोग सोच रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। इन लोग को पैर में रस्सी लगाया है, इन लोग भागना चाहिए। सी, ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है, राइट?
आपका नाम भाई साहब? हाँ, महेश। आप कहाँ से? पाकिस्तान से। सो महेश साहब के साथ एक दोस्ती हो गया, ये कैमल के साथ भी दोस्ती हो गया। सी, हम लोग के साथ एक हो जाए सेल्फी। हाय। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं कभी नहीं हाथ लगाया था कमल को, कभी नहीं हाथ लगाया था, कभी नहीं। ओके, बाय बाय जी। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं फिर से इंशाल्लाह। Actually, they are returning to home. See the baby camel on the top of the sand. Walk कर लेते हैं. It's kind of what? Sunset walk? Sunset walk. Walk in desert. Walk in desert. Walk in desert. After sunset, the area is like it, quiet. Only wind, sand, sky, rock. That's it. दोस्तों, लेट तो हो के गया, लेकिन हम लोग एंजॉय किया सनसेट। जैसे मैं बोला आप लोगों को, सनसेट इधर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जगह पूरा एकदम सुनसान है, सैंड एरिया है। और जो हम लोग का प्लानिंग था फाइनली वो हुआ नहीं। वो क्या था एक्चुअली, हम लोग को जाना चाहिए था रॉक का ऊपर से सनसेट देखना, लेकिन ऊपर से सनसेट रियली इट्स थिंक इट गोना बेटर देन दिस, बिकॉज हम लोग के पास जो कार है वो 4x4 है नहीं, सो वी कांट ड्राइव over there. So next time हम लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं